हाय एवरीवन, मेरा नाम है चांदनी सिंह और आज मैं आपको एक बहुत ही अलग वीडियो दिखा रही हूँ, अ डिटेल्ड आई मेकअप वीडियो. सो इफ़ यू रियली लाइक इट, डू लाइक माई पोस्ट एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट इट. सो आई स्टार्ट विद प्लकिंग द आईब्रोज. अगर ब्राइड्स ब्राउज करा के भी आते हैं, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग एक्स्ट्रा एंड आई ऑलवेज रिमूव इट. एंड टिशा की आँख पे स्टिचेस भी हैं एंड आज मेरा फोकस है टू हाइड इट. अगर आप चाहते हैं आपका आई मेकअप पॉप करे, रिमेंबर द ब्राउज हैव टू बी फिल्ड इन परफेक्टली. और आज मैं यूज़ कर रही हूँ Forever 52 का Aqua brow, which is one of my new favorite product for the brow. So for everyone's knowledge, I'm using my own brand of brushes. It's called the Nari Studio. Please follow us on Instagram. Eyebrows बनने के बाद I always carve them and I'm using the cut and carve brush from Nari. I have been using the Louise eyeshadow base since 2018 and I absolutely swear by it. Louise eyeshadow base मैंने all over the lids नहीं लगाया है. उनके lid space पे मैं Louise का ही brown color का base use कर रही हूँ, shade 11. आज मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का आईशैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो मुझे एक PR पैकेज में मिला था. एंड आई प्रेफर टू गो फ्रॉम लाइट टू डार्क व्हेन एवर आई डू आई मेकअप. सो आई एम स्टार्टिंग विद द लाइटेस्ट मैट आई शैडोज इन दिस पैलेट एंड आई एम यूजिंग नारी ब्लेंडिंग मीडियम एंड लार्ज ब्रशेज फॉर इट. I also take one of the darkest color in the same palette and I apply it over the brown base. This helps me conceal the stitches better. इस ब्राउन आई शेडो के एजेस ब्लेंड करने में मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ. आई मीन यू आर जस्ट गोइंग टू सी हियर मे बी 10 seconds of it, but I spend at least 7 to 8 minutes doing it. नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सम गोल्ड ऑन द लिड एंड मैं कॉन्शियस एफर्ट करूँगी कि स्टिच वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट नहीं होना चाहिए. Also, I always like to apply a shimmer color with a flat brush and this is the time when I apply the maximum pressure on the lids. Also, मेरा ये ब्रश हल्का सा डैम्प होता है मैट फिक्स प्लस के साथ. I apply a minimum of 2 coats and मैं उसके edges blend out करती हूँ हमेशा नारी के small blending brush के साथ. Today I'm also applying a pigment. I've used something from Inglot, but unfortunately उसका sticker उतरा हुआ है, so I don't know what shade I've used. Got to mention guys that I do not apply a pigment with my fingertips. I always like to dip my brush in Duraline, dip it into the pigment and then apply it. I feel इससे वो ज़्यादा long lasting रहता है. Just make sure कि आप बहुत ज़्यादा layering ना करें, otherwise it can tend to crease. So with Nari we have a medium eyeliner brush and now we are launching a small one and today I'm using the small one because I want to keep the eyeliner really thin. और eyeliner लगाते लगाते I feel that the brown and gold need to be blended better, तो मैं बीच में वो भी करना स्टार्ट कर देती हूँ. So I come back to the eyeliner and I finish it. मैं इसके कम से कम 2 coats लगाती हूँ and I always like to apply in the inner corner while making the person open her eye. I curl lashes and I use the Character Cosmetics mascara and I'm using a disposable wand for it as I do not like to double dip my products. जब भी मैं विंग eyeliner करती हूँ, I always like to highlight the outer edges with powder. You can also use the cream product with it, but I feel that a powder works better. And then it's time for some lower lash mascara and I also use a brown eyeshadow on the lower lash line. I keep it darker on the outer side and I keep it lighter in the inner corner because I want the eye to be defined at the same time. मेरे को उसको एक almond shape देना है, तो सिर्फ outer edge को darken करने से वो effect आता है. And I'm picking up one of the brightest shade in the palette. I'm doing the brow bone highlight. Brow bone highlight करने के बाद मैं हमेशा blending brush से उसके edges को blend ज़रूर करती हूँ. I also use the same color in the inner corner and I blend it out really well. आज मैंने एक के ब्यूटी की पेंसिल भी यूज़ करने की कोशिश करी बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लव इट. सो आज फॉर लैशेज आई एम यूजिंग नारी लैशेज इन स्टाइल अनायता. अब आप सबको पता है कि मुझे नेचुरल लैशेज बहुत पसंद है. आई हेट यूजिंग दोज झाड़ू मिंक लैशेज जो पूरे आईलिड्स को छुपा देते हैं. आई मीन इतनी मेहनत करके अगर आपको इतनी हैवी मिंक लैश लगानी है तो फ़ायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करने का. नारी में हमारे पास मिंक लैशेज भी हैं जो आपके आई मेकअप को काफ़ी एनहांस करता है और छुपाता नहीं है. And lashes लगाने के बाद I spend a lot of time covering up the lash band. I think this is another mistake most makeup artists do. This is the final look and I hope you guys like it, and if you notice the stitches are not visible at all.
So do let me know in the comments if you would like to see more detailed videos like these. Thank you so much.